Good morning students. Today we will learn your second chapter more on MS window. Okay, more on MS window. Dear children, you have learned in the previous year that the MS window. What is the MS window? MS window is a operating system. MS window is a operating system that control all over the activities in the computer. Okay, computer में जो भी activities हम कर रहे हैं, who control the MS window control. The MS window is a operating system has many flavor. Is called as version. MS window क्या है? The MS window is a operating system. Okay, MS window is a operating system. ये MS window क्या है? एक operating system है. Okay, जो operating system होता है, the operating system has many flavor. ये जो operating system है, MS window operating system, it has many flavor. Okay, the many flavor is called as the version. क्या कहते हैं? Is called version. Okay, the MS Windows has many flavors. Is called as version. Such as लिखेंगे क्या क्या version है? MS Windows 95, MS Windows 98, MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 and MS Windows 8. These were the version of the MS Windows. Okay, the MS Windows we'll see today. MS Windows 7. The MS Windows 7 is one of the most popularly used operating system. Mostly popularly used operating system that is MS Windows. MS Windows is mostly popularly used operating system. It developed by कौन डेवलप किया है? Microsoft Corporation for the general purpose of the computer system. The personal computer that is CPU. Okay, it is used both at home and for the business work. ये जो MS Windows 7 है कौन उसको ये कहते हैं? The Microsoft Corporation has क्यों बनाए थे? For the purpose of in the homes and in the business purpose. Okay, it provide us a graphical user interface. This simply is called as GUI. What is the full form of GUI? That is graphical user interface. Graphical user interface. Okay, what is the full form of GUI? GUI means graphical user interface. Okay, here it is provide graphical user interface. It uses picture, icons and buttons for performing different operations. So you do not have to remember all the commands. You can perform the function like creating, renaming, copying, deleting the file and folder just using a mouse. A mouse की use करके क्या कर सकते हैं? Deleting a file, जो rename a file. Okay, all these things we can do. Then we will see what are the features of the Windows 7. Windows 7 का features क्या है? क्यों हम उसे बहुत सारे लोग क्यों Windows 7 को use किए? देखें, the Windows 7 has a very attractive look and color theme. Windows 7 का है attractive look है and color theme इसका बहुत अच्छा है. It comes with a new feature and improved program. Okay, इसका new features है and improved programs and faster speed. Okay, वो fast speed काम करता है. Among the new features available in Windows 7, there is also a new technology that run in the background, making your computer more efficient and reliable. ये सब चीज के बाद भी एक new technology है that run in the background, that making your computer most efficient and reliable. Okay, it has security tools that are used to keep our computer more secure. Okay, what are the features we have learned? There are the features that of the Windows 7 are improved programs, new features and faster speed. And with this and new technology also is there in the background, it is reliable and it will be efficient. Okay, then it has a security tool that has keep our computer more secure. These are the 3 points, the features of the this window. Then we'll see the control panel. Control panel क्या है? The control panel in the Windows 7 allow you to change the display setting and to remove program or change the date and time. Control panel, what is control panel? Control panel is a program of the Windows 7 जिसमें क्या कर सकते हैं? Display change कर सकते हैं, date, time ये सब क्या कर change कर सकते हैं. It also helps to manage different resource and functioning of the computer system. Okay, the most common
are Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional and Windows 7 Unlimited. These are the operating system of edition. These are the edition of the Windows 7. Okay, 3 edition are given in the book: Windows 7 Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Unlimited. Okay, when you start Windows 7, its desktop appear like this. All of you see, when the Windows 7 is when you on your desktop, this screen is appearing. This is the Windows 7. It has many icon on it. This icon used to operate different programs, files and folders. This is the Windows 7. ये क्या operating करता है? It is icon. There are many icon in this Windows 7. It helps to operating, to using, opening the different programs, files and folders. Okay, these were the Windows 7. Then the Windows 10. Now the Windows 10 is all of you are using. Windows 7 became the old, and now Windows 10 is all are using. Okay, Windows 10 is the latest version of the Windows. Okay, then we'll see the files and folders. About files and folders, how we create a file, how we create a folder. Okay, अभी हम फाइल और फोल्डर के बारे में पढ़ेंगे. About files and folders. Okay, files and folder. Okay, about files and folders. So suppose you are drawing a picture on the pen and typing a letter in the MS Word. After completing the task, what do you do? हम पेंट फाइल पेंट प्रोग्राम में पेंट किए और जो लेटर टाइप के MS वर्ड में उसको क्या करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे ना. तो सेव जो करेंगे वो कैसे हम करेंगे वो हम देखेंगे. तो what do? You simply save it in a text with a name. Okay, the area on the disk that contains some information and that is saved with the name is known as the file. जो नेम में हम जो काम किए हैं, जो सेव करते हैं, उसको बोलते हैं फाइल. Okay, the name in which we save our document is called file. In the other word, we can say that the file is a collection of data stored on some storage device is called as hard disk. जो चीज सब फाइल हम स्टोरेज करते हैं वो कहाँ जाकर स्टोरेज होता है? हार्ड डिस्क में स्टोरेज है. Where is the hard disk? In the CPU box. CPU box में क्या होता है? हार्ड डिस्क. वहाँ जाकर सब कुछ फाइल और फोल्डर क्या होता है? सेव होता है. The folder, what is folder? The file is given name. What is folder? The folder is a place where many files are stored. जो फाइल में फाइल क्या है? The name of the content, but that what we are preparing or what we are done a document, that is we are giving a name. The name is for identify the recognize the file, and then all the files that are saved in a folder. Okay. The folder is a place where the many files are stored. In the other word, the file content in a folder. Okay, many files are contained in a folder. The folder may have one or more files stored in it. Folder में क्या होता है? One or more files can store in a folder. A folder may also contain store different folder with files in them. It means that there may be both files and folder inside a folder. Folder के अंदर क्या होगा? Folder हो सकता है, तो file भी हो सकता है. Okay, you have to remember what is subfolder. Here is given. Do you know about what is subfolder? A folder within a folder is called a subfolder. Folder के अंदर folder होगा, तो it is a subfolder. Each file in the folder has a name that is unique. सब फाइल का नेम क्या अलग अलग है. हम सबका कैसे अलग अलग नेम होता है. ये इसका रामो, इसका जो भी नेम होता है सबका अलग अलग नेम होता है नहीं. तो वैसे ही जब फाइल करते हैं उसका सबका अलग अलग नेम होता है. क्योंकि ये सब यूनिक नेम देने से क्या होता है? फाइल को आइडेंटिफाई करने से कौन सा फाइल में कौन सा नेम हम सेव किए हैं, we should easily can identify or easily can know. So ये सब जो फोल्डर में फाइल सेव होते हैं, जो फाइल में नेम करके फाइल सेव करते हैं, तो we'll see how to create a folder. Folder कैसे क्रिएट करते हैं, we'll see here. Okay, to create a folder, we'll see what are the steps. To create a folder, there are many steps are there. To follow the steps for creating a folder, we see. Let us learn to create a folder on the desktop. कहाँ बनाएंगे? Desktop में screen में folder create करेंगे. To create a new folder on the desktop, follow some steps. Okay, here is given how to create a new folder. Move the mouse pointer away from the icon on desk and right click the mouse, then shortcut menu is appear. Okay, then click the here. Here is the screen is there. Okay, first you have to right click on the जो
एक न्यू ऑप्शन होगा दिखना। द स्टेप 2 इज क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, देन द न्यू ऑप्शन आएगा, सब मेन्यू अपीयर, देन क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन। जो न्यू में क्लिक करने से देखो एक फोल्डर ऑप्शन आएगा, तो स्टेप 3 क्या है, फोल्डर ऑप्शन में क्लिक करना है, देन यू गेट द फोल्डर ऑप्शन। द फोल्डर ऐसे क्रिएट हो जाएगा, देखो न्यू फोल्डर आ गया, वहां तुम जो भी नेम दे सकते हो। ओके, क्लिक the type of name of the folder as you want. For example, here given is the first folder, right? First folder. You at your choice you can give any name to this folder. Okay, creating a file. Okay, ये हम देखिए फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। जस्ट अब एक फोल्डर बन गया, क्रिएट कर दिए, उसके बाद देखेंगे हाउ टू क्रिएट ए फाइल। फाइल कैन बी क्रिएटेड इन एनी प्रोग्राम इन द विंडोज। एनी प्रोग्राम में हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इन द फैक्ट वी नो हाउ टू क्रिएट ए फाइल। यू हैव टू क्रिएट your file name is Word or Pen in the previous classes. Okay, after completing a task, when you save your file by giving a name, file is created. हम जो भी काम करते हैं MS Word में हो, Pen में हो, जो भी काम किए हम सेव लिखते हैं ना, सेव काम किसमें करते हैं, एक नेम देते हैं, वो नेम है फाइल है, वो सब फाइल क्या करते हैं, लास्ट को फोल्डर में सेव होता है। ओके, दिस इज द क्रिएटिंग ए फाइल। ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर, हम क्या क्रिएट कर दिए, फाइल क्रिएट कर दिए, फोल्डर क्रिएट कर दिए, तो हाउ टू ओपन दिस फाइल एंड फोल्डर विल सी। When you have to open a file or folder, simply move the mouse pointer to the required file or folder, double click। हम क्या कहते हैं, फोल्डर कहाँ सेव किए थे, डेस्कटॉप में सेव किए थे, है ना, नहीं डेस्कटॉप में सेव किए थे, तो डेस्कटॉप में वो जो फाइल होगा कंटेंट ऑन द फोल्डर, तो उसको डबल क्लिक करना है, सिंपली गो टू द फोल्डर इन द व्हिच नेम यू सेव एंड देन डबल क्लिक द folder। Okay, then you will open the contents and then you can view it। Okay, then we will see the renaming a file and folder। हम renaming कैसे करेंगे, नेमिंग कर देते हैं, उसके बाद रीनेम कैसे करें। रीनेम मींस टू चेंज द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। हम पहले नेम देते, उसके बाद हमें कुछ चेंज करना है उसके नेम में। हाउ टू रीनेम द फाइल ऑफ एग्जिस्टिंग वन, जो फाइल ऑलरेडी नेम में होगा उसे रीनेम कैसे करेंगे देखेंगे। रीनेम मींस टू चेंज द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग फोल्डर, जो ऑलरेडी हो चुका है हम नेम दे देते, फिर से नेम देंगे, तो कैसे देंगे। टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर फॉलो स्टेप। ओके, ये सब देयर आर 2 स्टेप्स आर देयर टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर। सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट हैज टू बी रीनेम। पहले तुमको सिलेक्ट करना है जो फोल्डर तुम्हारा होगा स्क्रीन में। ओके, डेस्कटॉप स्क्रीन में जो फोल्डर होगा उसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है द माउस बटन एंड सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शन, ऐसे आ जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ सिलेक्ट करना है, फर्स्ट टाइम इज सिलेक्ट द फोल्डर दैट वाज क्रिएटेड इन द स्क्रीन डेस्कटॉप, देन आएगा ओपन, ऐसे आएगा रीनेम। ओके, हमें रीनेम ऑप्शन होगा, उस रीनेम को क्लिक करेंगे, देन वी राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट द नेम, अदर नेम। ओके, इन दिस वे द given। Then deleting a file or folder, we will see deleting a file or folder। तो a file or folder is safely deleted। ओके, कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, जो फाइल क्रिएट किए जब हमारा कुछ काम नहीं होगा तो मैंने हमें उनसे डिलीट करना चाहिए। ओके, हम कैसे डिलीट करेंगे, टू डिलीट a file or folder there are also some steps are there how to delete a file। वैसे ही फर्स्ट सिलेक्ट द फोल्डर, रीनेम में जैसे सिलेक्ट किए वैसे सिलेक्ट द फोल्डर। देखो रीनेम के ऊपर एक डिलीट ऑप्शन आएगा। रीनेम में क्या कहते हैं, सिलेक्ट किए थे उसके बाद रीनेम किए थे, वैसी तरह से उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट ऑप्शन आएगा, तो वी क्लिक ऑन द डिलीट, देन देयर इज ए बॉक्स इज ओपन, डिलीट फोल्डर इज ओपन, you have to type yes or no। if you want to delete the, you click on the yes। okay, the press the enter, the click the yes button and delete the file or folder, or no, cancel or delete। okay, in this way we can delete the folder or file। तो मूविंग और कॉपिंग ए फाइल्स और फोल्डर, हम फाइल के हम कैसे मूव करेंगे, ओके, कॉपी कैसे करेंगे देखेंगे। टू मूव और कॉपी ए फाइल और फोल्डर गिवन सम स्टेप्स आर देयर आर 4 स्टेप्स हाउ टू मूव और कॉपी ए फाइल। सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर, टू मूव और कॉपी फर्स्ट सिलेक्ट करना है फाइल और फोल्डर दोस्त वेयर यू हैव टू मूव, देन क्लिक द राइट माउस द कट और कॉपी, कट करके और कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी करना, उसके बाद सिलेक्ट करना, उसके बाद कॉपी ऑप्शन जाएगा, देन सिलेक्ट द लोकेशन, कहां पर कौन सा जगह तुमको मूव करना है, उसके बाद सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू मूव, ओपन द फोल्डर एंड डबल क्लिकिंग इट, देन नाउ राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट किए क्या किए, जो फोल्डर के ऊपर सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन में कॉपी मारेंगे, कॉपी करके जाएंगे कौन सा लोकेशन में हम उसको मूव करना है और कॉपी करना है, उस जगह को जाएंगे, वहां क्या करेंगे पेस्ट, राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन को मारेंगे, तो
Okay, first select, then select the location where you have to move. Okay, move, उसके बाद you have to paste there. Okay, select करने के बाद कट करेंगे, कट करने के बाद मूव करेंगे, मूव कर कौन सा लोकेशन में वहाँ पेस्ट. You understand all of you how to move and copy the folder and files? Then the Android operating system. We'll see Android operating system. The MS Windows XP and MS Windows 7 that are the control over the all the activities of the computer. These were the operating system Android. Okay, the Android is one of the operating system that operate a smartphone, tablet or digital mobile device. हम सिर्फ कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं, हम क्या मोबाइल यूज करते हैं, ओके, लैपटॉप यूज करते हैं, जो टैबलेट यूज करते हैं. These are the also the operating system. Okay, these are the Android system. The Android is a Linux based operating system. The Android को क्या बोलते हैं? It is a Linux based operating system developed by Google. कौन कहते हैं? Google में सर्च करते हैं, Google developed this. It is founded by Andy Rubin in the October 2003. कौन फाउंडेड किए थे? एंडी रूबिन in the October 2003 in the California. कहाँ के वो रहने वाले थे? कैलिफोर्निया के. The first commercial version Android is 1.0. Okay, was realized by the September 2008. कौन से ईयर में? September 2008 में. Android 5.5 Lollipop is the latest version realized in the November 2014. अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? Android 5.5 Lollipop is the latest version released in the November 2014. Then we'll see the features of the Android operating system. बोलो क्या होगा? हम Windows 7 का दिखेंगे फीचर्स. अभी दिखेंगे जो Android operating system है उसके क्या क्या फीचर्स दिखेंगे. Android has very user is greatly attracted to with color themes. तो क्या attractive looks होते हैं, color themes भी होते हैं. Then Android home screen can be easily personalized. Okay, easily personalized होता है. Android home screen is made up of several pages which can sweep back and forth. Okay, उसका बहुत सारे पेज होते हैं. We can sweep and back and forth. Okay, in this way your second chapter is finished. The more on MS Windows 7. Okay, all of you, I will give you the exercise question answer. You will do it. Okay.